हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग रिसर्च के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लैगियरिज्म के बारे में समझेंगे कि प्लैगियरिज्म क्या होता है। पहले तो प्लैगियरिज्म की हम मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है। प्लैगियरिज्म का मतलब होता है साहित्य चोरी। साहित्य चोरी इसका मतलब यह होता है कि जैसे हमने किसी का कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखा और उसका हमने अपने रिसर्च में कोई क्रेडिट नहीं दिया, तो इसे हम साहित्य चोरी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में प्लैगियरिज्म कहते हैं। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं कि प्लैगियरिज्म क्या होता है। ठीक है। प्लैगियरिज्म इज ओरिजिनेटेड इन 17th century फ्रॉम द लैटिन वर्ड plagiarius. The Oxford Dictionary defined plagiarism as the practice of someone else's work or the idea passing them as one or own. ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो है प्लैगियरिज्म को डिफ़ाइन किया था कि द प्रैक्टिस ऑफ समवन एल्स वर्क और आइडिया पासिंग देम एज वन और ओन। अभी कुछ प्लैगियरिज्म के डेफिनेशन दिया है कि प्लैगियरिज्म इज़ अ एक्ट ऑफ यूजिंग अदर वर्ड्स एंड आइडिया without proper attributions. Plagiarism is considered form of intellectual theft and has a serious academic consequences. इसका मतलब होता है कि एक साहित्य चोरी, हम मतलब किसी का लिए भी और उसको मतलब क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। किसी का आर्टिकल्स लिखा या किसी का रिसर्च पेपर्स लिखा और क्रेडिट नहीं दिया, तो उसे हम प्लैगियरिज्म कहते हैं। ठीक है। अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं प्लैगियरिज्म का क्या होता है। ये डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेगी, आपके कोर्स वर्क्स में भी आपसे पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पीएचडी के कोर्स वर्क में। प्लैगियरिज्म मीन्स एन एक्ट ऑफ एकेडमिक डिसऑनेस्टी एंड अ ब्रीच ऑफ एथिक्स. It involves using someone else's idea or work as one own. It's also include data plagiarism and self plagiarism. Plagiarism also include करता है data plagiarism and self plagiarism. Plagiarism now is not continued to mere cut and paste. Synonymizing and translation technologies are given in a new dimensions to plagiarism. Based on various dictionary or scientific definitions of plagiarism will be the wrongful appropriations and stealing and publications of another's author's language, thought, idea, or expressions, and the representation of them as one's own original work. Four elements present in most definitions. The unattributed use of word, text, idea, or illustrations created by someone else other than author listed. The failure to credit the original real author in a manner appropriate to the communications. The implication or statement that the plagiarist is the original author. The failure to obtain the original author consent. Any of this element individually or collectively constitute plagiarism. प्लैगियरिज्म एक रिसर्च का बहुत बड़ा टॉपिक है। Most common forms of plagiarism in the writings are the ghostwriter, making a copy of another work word for word and verbatim to this without being of citing the original document. The photocopywriter, to make a copy of significant portions of the another writing from one and single source without modification and acknowledgement to the source use. The potluck paper writer, attempt of copying from a several other source with a few changes have made of paragraphs and sentences related to the most of the original phrasing. The self-stealer writer, borrower idea generously from own previous work and common thread to all above, not putting them original source. प्लैगियरिज्म एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको पीएचडी के कोर्स वर्क के दौरान आपको सिखाया जाता है कि आप मतलब साहित्य चोरी मत करिए। जिसका भी मतलब आप रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम देना आपको कंपलसरी होता है अपने रेफरेंस में या लिटरेचर रिव्यूज़ में। हम कुछ टाइप्स ऑफ देख लेते हैं कि प्लैगियरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। कॉपिंग आर मोस्ट कॉमन टाइप्स
To copy someone else's work and put your name on it, you have plagiarized. इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी के वर्क को कॉपी किया बट उसका क्रेडिट नहीं दिया और अपना नाम दे दिया। ठीक, ये भी एक तरीके का प्लैगियरिज्म है। फिर क्या है सेकंड, पैचवर्क प्लैगियरिज्म। Similar to copying and it perhaps the second most common type of plagiarism occurs when the plagiarizer borrows the face and clause from the original source and weaves them into his own writing without putting the face in quotations mark or citing the author। मतलब हम quotations और mark मतलब नहीं put किए, ये भी एक तरीके का plagiarism से होता है। फिर एक paraphrasing plagiarism भी होता है, इसको देखते हैं क्या होता है। Occurs when the plagiarizers paraphrase or summarize another work without citing the source, even changing the word a little or using synonyms, but retaining the author's essential thought, sentence structure, and/or style without citing the source is still considered plagiarism. Unintentional plagiarism occurs when the writer incorrectly quote and/or incorrectly cite a source they are using. अब कुछ प्लैगियरिज्म को डिटेक्ट करने के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। द एंटी प्लैगियरिज्म सॉफ्टवेयर enable scanning of document against billion of online sources such as web pages, local database and database of journals and periodical and online scholarly publications and similarities is generated to estimate the percent of matches. The software to look match a string of 8 or 10 words. It extracts the text portions and look through them for matching of words in a phase of a specified minimum length. When it finds a matching of file that shows enough word in a number of phases, a report generated which contain the document text with the matching of phase underlined or highlighted. I hope समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपके कोर्स वर्क में एग्ज़ाम के टाइम पूछा जाता है। It is any computer software, both proprietary and free software, which help to know the source of borrowed or stolen textual expressions in a new document. If any, and also count the percentage of similarities between a suspected pieces and the huge database of the anti-plagiarism software. Catches anti-plagiarism software. Anti-plagiarism software, there is a variety of free and commercial software. Turnitin, URCon, EVE, iThenicid, CrossCheck, WCopyFine, WordCheck। एक और सॉफ्टवेयर होता है आपका जो प्लैगियरिज्म को चेक करता है, डुप्ली चेकर होता है। यहाँ पे भी आप अपने प्लैगियरिज्म चेक कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। तो इतने तरीक़े के सॉफ्टवेयर से हम प्लैगियरिज्म्स को चेक कर सकते हैं। Plagiarism checks method in India most common URCon, Turnitin. The Infinite UGC recommend a URCon plagiarism checkers, the anti-plagiarism tool developed by the Info Center AB, being used by more than 250 universities and colleges in India and more than 3,000 institutes worldwide like Europe, US, Asia and the Middle East part. URCon enable a checking of documents from the three central source areas are materials such as web page, published materials in the form of journals and other scholarly material by the last publications house and previously submitted student assignment. This software mark text of this if copied are 30 consecutive words from the writing of other not acknowledged with a quotation mark. एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट प्लैगियरिज्म को डिटेक्ट करने का सॉफ्टवेयर होता है टर्निटिन। प्लैगियरिज्म चेकर इज़ अनदर एंटी प्लैगियरिज्म सॉफ्टवेयर।
is cloud-based service developed by iParadigm to advance the student learning and evaluation. टॉन्टेंट प्लैगियरिज्म से भी सॉफ्टवेयर होता है, उससे भी हम अपने प्लैगियरिज्म को, अपने थीसिस को चेक कर सकते हैं, अपने थीसिस को चेक कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कोई प्लैगियरिज्म है कि नहीं, ये चेक हो सकता है. The similarity checks for plagiarism shall exclude the following. All quoted work either falling under public domain or reproduced with all necessary permissions and are attribution. All reference bibliography, table of content, reference and acknowledgement. All small similarities of minor natures. All generic terms, law, standard symbols and standard equations. टॉलरेंस लिमिट ऑफ प्लैगियरिज्म. अब हम कुछ लिमिट देख लेते हैं प्लैगियरिज्म की. टॉलरेंस लिमिट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. While evaluating the doctoral thesis in the universities in India, different prevailing tolerance limit for plagiarism have been found out for the acceptance of plagiarism similarity percentage in this thesis. कितने परसेंट के मतलब प्लैगियरिज्म को टॉलरेट किया जा सकता है, ये हम देखते हैं. Therefore, the tolerance limit varies from 10 to 15% to maximum of 30% among various university. 10 से 15% तो प्लैगियरिज्म ठीक है, बट इससे ज़्यादा होता है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है आपकी थीसिस में. एंड टॉलरेंस लिमिट गिव बाय द यूजीसी इज़ बिलो 10%. यूजीसी के द्वारा जो टॉलरेंस लिमिट दी गई है वो बिलो 10% होनी चाहिए. अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन कोर एरिया. The core work carried out by the student, faculty, staff and researchers shall be based on original idea and shall be covered by zero tolerance policy on plagiarism. In case plagiarism is established in the core work claim, then plagiarism disciplinary authority, PT of the HEI shall impose a maximum penalty. The core work shall include abstract, summary, hypothesis, observations, result, conclusions and recommendations. अब हम कुछ लेवल ऑफ प्लैगियरिज्म देख लेते हैं इन नॉन कोर एरिया. फॉर ऑल द अदर्स नॉन कोर केस, प्लैगियरिज्म विल बी क्वांटिफाइड इनटू फॉलोइंग लेवल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेवेरिटी फॉर द पर्पस ऑफ इट डेफिनेशन. Similarities up to 10% excluded, level 1. Similarities about 10% to 40%. Level 2. Similarities above 40% to 60%. Level 3. Similarity above 60%. अब हम कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं यूजिंग एंटी प्लैगियरिज्म टूल. There is a disagreement on tolerance of plagiarism percentage accepted by the Indian university. As per the norms, most universities declare a tolerance plagiarism limit up to 30%. Whereas few other universities allow tolerance limit in range of 15 to 25% for the introduction and review of literature. Uses the definitions and the common theories. This is the definition. Common theories and mathematical equations are the common knowledge to earlier published literature may be plagiarized to certain extent. There is a disparity in calculating the similarity index while scanning the thesis and research papers by the recurrent QR anti-plagiarism tool if comparing with other symbol software tool like Turnitin. Example 5% in Uricon, 90% in Turnitin. An anti-plagiarism software tool is able to process only English language text, and there are also many universities in India which have a provision to submit their doctoral thesis in language other than English. Turnitin and Uricon both are enabled for search for the plagiarism detection in India language. Plagiarism detection software merely understand on a double quotation marks and exclude the text during scanning. They are quoted in quotation marks which are not commensurate with the citations rule set by the typical citation style guide, APO and MLA, etc.
अवॉइडिंग प्लैगरिज्म। अब क्या क्या अवॉइड करने के लिए प्लैगरिज्म होता है? अवॉइडिंग प्लैगरिज्म, एवरी सिंगल इंस्टेंस ऑफ यूजिंग अ फेस एंड आइडियाज दैट आर नॉट योर ओन must be acknowledged by giving the names of the persons who first expressed every concept or to there which is mentioned in your text. When someone words are directly quoted, always place this word in a quotation mark. Longer quotations which you should try to avoid or simply sparingly should be blocked to make them stand out clearly. This means identifying single spacing the entire quotation, also using a smaller typeface if you wish. If trying to express another's word or idea by paraphrasing them, use your own word. It is not enough simply to change the word order or to substitute one or two words only. फिर कहते हैं more language material can be summarized one own style and language. Do not repeat the author's other words without placing them in quotation mark. Whenever using your own word to express the ideas of the someone else, you must still quote the source even though you them do not have to use quotation mark. It is important to keep a list of full detail of all the reference that might be used as you go along and not think that you will be able to do the citation at the last minute, as you are bound to those flaws. Some of them are you have read. Information from a wide range of electronic sources is increasingly used in academic writings, and reference to such sources should be included in the list of the source cited in a written text. अब पेनाल्टीज देख लेते हैं क्या है. Penalties in the case of plagiarism should be imposed on a student pursuing studies at the level of UG, PG, Masters, MPhil, PhD, and faculty and staff of the HEI only after academic misconduct on the part of the offenders has been established without doubt. When all avenues of appeal have been exhausted and individual in question has been provided enough opportunities to defend himself or herself in a fair or a transparent manner. Penalties for student level 1. Similarities about 10 to 40%. Such students shall not be given any mark and no credit for the plagiarized skip and shall be asked to submit a revised skip within a stipulated time period not exceeding 6 months. Level 2, similarities above 2 to 60%, 0 to 60%. The student shall not be given any mark in credit for plagiarized skip and shall be asked to submit a revised skip after a time period of 1 year, but not exceeding 8 months. Level 3, similarities above 60%. Such students shall not be given any mark and credit for the plagiarized skip, and his registration for this course can be cancelled. Penalties for the faculty, staff, and research of HEI. Level 1, similarity above a or to 40% shall be asked to withdraw manuscript submitted for the publications and shall not be allowed to publish any work for a minimum period of 1 year. Level 2, similarities above a 4000 to a 60% shall be asked to withdraw manuscript submitted for publication and shall not be allowed to publish any work for a minimum period of 2 years and shall be denied a right of 1 annual increment and shall not be allowed to be supervisor to any UG, PG, Master or MPhil and PhD student and scholar for a period of 2 years. Level 3, similarly above 600, 60% shall be asked to withdraw manuscripts submitted for the publications and shall not be allowed to publish any work for a minimum period of 3 years and shall be denied to right to successive annual increment and shall not be allowed to be a supervisor to any UG, PG, Master, MPhil, PhD student scholar for a period of 3 years. आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि प्लैगियरिज्म्स क्या होते हैं और प्लैगियरिज्म्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं और इसको मतलब कितने लिमिट तक आपका प्लैगियरिज्म्स को टॉलरेट किया जा सकता है आपके थीसिस में. आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू. और इससे जुड़े अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू.